Good morning, everyone. In today's science class, we will solve numericals from chapter sound. In our previous classes, we have studied that frequency can be defined as number of oscillations in a second. 1 second में कितनी बार जो है vibrations हुई या कितनी बार oscillations हुई, means number of oscillations in 1 second. That is frequency, and its unit is hertz. Hertz को हम कैसे represent करते हैं? Hz. Okay, and the time period को हम कैसे define करेंगे? It can be defined as time taken to complete one oscillation. कि when your pendulum moves, one oscillation में उसको कितना time लगा? Time taken to complete one oscillation, that is a time period, and its unit is second. Now you can see from here कि frequency and time period, they have some relation. It is number of oscillation in 1 second, कितनी oscillations हुई 1 second में, and here कितना time लगा one oscillation को. So they have some relation. Okay, so now we will study the relation between them. What is the relation between frequency and time period? Frequency and time period के बीच में क्या relation है कि time period जो है it is equal to 1 upon frequency, means they have inverse relation. Okay, reciprocal of each other. Time period is equal to 1 upon f और f क्या हो जाएगा? 1 upon t हो जाएगा. Okay, so time period is equal to 1 upon frequency, or you can say frequency is equal to 1 upon time period. Now based on these two relation, or you can say only one relation is here. Okay, so based on this relation we will solve numericals. See question number 16. A pendulum oscillates 40 times in 4 seconds. एक पेंडुलम जो है वो 40 टाइम्स ऑसिलेट करता है, कितने टाइम में? 4 सेकेंड्स में. फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. तो आपको टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है. ओके, तो टाइम पीरियड क्या होता है? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी भी मुझे निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए मैं क्या करूंगी? सी, in this line a pendulum oscillate 40 times in 4 seconds. यहाँ से आपकी फ्रीक्वेंसी निकलेगी क्योंकि पेंडुलम का नंबर ऑफ ऑसिलेशंस दिया हुआ है कि पेंडुलम जो है वो आपका 40 टाइम्स ऑसिलेट कर रहा है 4 सेकंड्स में. एंड how do you define frequency? Number of oscillations in 1 second. Okay, so number of oscillation in 4 seconds, it is given to you 40. Okay, 40 times oscillates in 4 seconds, means number of oscillations in 40 seconds in 4 seconds is equal to 40. तो 1 second में कितना हो जाएगा? 40 divided by 4, that is 10. The number of oscillation in 1 second is 10, and that is your frequency. Frequency भी तो यही है, number of oscillation in 1 second. See, you are calculating number of oscillation in 1 second, that is 10, means frequency is 10. And unit of frequency is hertz. तो आपने frequency calculate कर ली. Okay, now you will calculate the time period. Time period आप कैसे calculate करेंगे? Time period is equal to 1 upon frequency. Frequency you have calculated 10. तो 1 upon frequency की value क्या आई है? 10. आप यहाँ 10 substitute कर देंगे. तो 1 upon 10 is 0.1. ये time period आप calculate कर रहे हैं, तो time period की unit क्या है? Second है. तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 0.1 सेकेंड. ओके, सो नाउ द सेकेंड न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 17. The sound from a mosquito is produced when it vibrates its wings at an average rate of 500 vibrations per second. मॉस्किटो जो है साउंड प्रोड्यूस कर रहा है अपने विंग्स जब वाइब्रेट करता है, और क्या रेट दिया हुआ है? 500 vibrations per second. Means number of vibrations per second is 500. Number of vibrations per second means in 1 second, that is 500. Okay, and it can also be written as frequency.
because number of vibration per second means 1 second is frequency. So number of vibrations per second means frequency. That is given to you 500 hertz. Okay. Now, what is the time period of the vibration? तो टाइम पीरियड क्या हुआ वाइब्रेशन का, वो आपको निकालना है. तो टाइम पीरियड निकालना है, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है. तो व्हाट इज द रिलेशन? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू 1. फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू यू 500, अपॉन में 500 आ जाएगा. तो 1 अपॉन 500 इज 0.002 एंड टाइम पीरियड कैलकुलेट करें तो टाइम पीरियड की यूनिट क्या है? सेकेंड. तो 0.002 seconds. Okay, this is how you will solve the numericals. Okay, do practice for it. एक बार खुद करना है, ठीक है? And do it carefully, understand the question carefully. Okay बच्चा, thank you and have a nice day.